And what has he done? I'm reading out a tweet which was translated into English. Greetings to revolutionary leader and publicity seeker Thiru Venkateshan. A Safai Karamchari in Madurai belonging to the scheduled caste community in Pendem who entered a septic tank died in the hospital due to the allergic reactions. He was forced to enter by a person named Vishwanathan belonging to the Communist Party of India, who is a ward member of Pendem Panchayat. He was made to do this by the Panchayat councillor Vishwanathan despite knowing it is unlawful, and there have been rulings in the Supreme Court and different organizations which have forbidden this act. Now he goes on to say, where is your red flag? Where is your revolution? Where are you emotionally hitting words? You're first to rant as if to something against the ruling BJP. Where have you gone now? Are you absconding or are you afraid? Doesn't your red flag weigh for your comrades? Or does it get to the streets to agitate against oppression meted out to the scheduled caste community? The last line is very interesting. The stink of a secessionism politics under the wrap of red flag is worse than the septic tank. Seek to live like a human brother. This is the tweet for which he has been arrested. And I, on behalf of the Bharatiya Janata Party, calls this a vendetta arrest for the arrest and the action taken against Senator Balaji. And the statement that came from the Chief Minister that he will take revenge for this. And this is an indication of how he has taken revenge. Now, on the Senator Balaji arrest case, he was the electricity minister and former transport minister, has been involved in major corruption in a cash for jobs scam. And being a minister, he has been threatening victims. After becoming the minister in May 2021, has been pulling strings to get rid of the case. Now, this is not a case that we wrote about. This was a case in which the Chief Minister himself, when he was in the opposition, wanted the former Transport Minister, Senator Balaji, arrested for corruption. Today, when he is a minister with DMK and has connections with the Chief Minister, a lot of exposure is going to happen. And the exposure will come straight on to the Chief Minister. And that is why he rushed to the hospital to meet the former minister. And despite the governor having said that he cannot hold a charge, and the governor is not claiming that he has a right to say that, but this is based on the Supreme Court rulings that when you have acted the way you have acted, the minister should not be given any charge, be what it may. This indicates what Stalin stands for. I'm not referring to the Russian Stalin, but this is the condition that prevails in the state of Tamil Nadu. Threat, muscle power, money laundering is the order of the game. And there is total loss of governance, and we find so many activities that are happening in the state of Tamil Nadu, which any Chief Minister would have taken cognizance. But Mr. Stalin has no time for this. He is worried that Senator will expose him. And worried he should be, because his acts, omissions and commissions that he has committed jointly will take him
to the place where he deserves to be in. So this is a message to the Chief Minister of Tamil Nadu that he concentrates on governance. And the arrest has been made to save the Communist Party. But this is a message not just to the Communist Party, this is a message to the Bharatiya Janata Party that we can arrest your people, we can do the same. But there has to be some comparison. Here's heavy corruption, money laundering, and the scams that he's exposed to has been spoken about. They tried to get this case into Supreme Court and try to win it, but Supreme Court said the investigation must go on. These are the conditions, and you compare these two cases. A man enters a septic tank, dies, and here is the arrest when an issue is raised. That means if you raise any issue in the state of Tamil Nadu, the Stalin will strike. And this kind of strike is not about democracy. This is the defeat of democracy. Rahul Gandhi should specifically look at the institutions in Tamil Nadu when he goes to London or US to talk about democracy. If democracy is falling, it is in these states where he is aligned, and he needs to do something about that before defaming India and saying democracy is failing in India. Thank you. Any questions? देखिए, जो तमिलनाडु में हुआ, जो हमारे सेक्रेटरी को अरेस्ट किया गया, एसजी सूर्या, और क्या कारण था? एक ट्वीट था। ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि भाई एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक पंचायत काउंसलर ने उस शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का एक वर्कर को, सफाई कर्मचारी को फोर्स किया एक सेप्टिक टैंक में उतरना। उसके बाद उसका मौत हुआ, हॉस्पिटल में हुआ मौत। और उसके बाद ये मिस्टर वेंकटेशन एब्सकॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है और भी एनजीओज ने इसके लिए ऑब्जेक्शंस रेज किया है, और समाज में ये सब समझते हैं कि ये गलत काम है, और उसके बावजूद ये सब करवाया। और इन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि भाई ये लाल झंडा लेकर आप चलते हो, क्या यही कारण है कि ऐसे गरीब लोगों का आप इस्तेमाल करते हो और उनको मौत पर उतारते हो? तो ये ट्वीट किया, गलत हुआ कि भाई स्टालिन सरकार ने उनको अरेस्ट किया, रात ही रात बीजेपी का एक सेक्रेटरी को अरेस्ट किया। और मैं समझता हूं ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? क्योंकि जब हॉस्पिटल में ये मुख्यमंत्री गए थे स्टालिन, उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। अरे बदला लेने के लिए कारण एक सेप्टिक टैंक में एक शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर को मौत पर उतारे आप, और उस पर हाईलाइट करने पर ट्वीट किया, और उस आदमी को रात ही रात उठाया गया। अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, नहीं है, तो क्या है? तो हमारा प्रश्न मुख्यमंत्री से है कि भाई सेनेथिल जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, और आपने ही मांगा था इनके रेजिग्नेशन। जब आप अपोजिशन में थे, आपने इनके अरेस्ट के लिए डिमांड किया था। और अब क्या हुआ? क्या ऐसा मोहब्बत है इनका कि या व्यापारी संबंध है, क्या है हम नहीं जानते, कि भाई वो हॉस्पिटल तक पहुंचा और धमकी देता है बीजेपी को कि हम बदला लेंगे। और कैसा बदला?
हम ये पूछते हैं इंसानियत है कि नहीं स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक ट्वीट के ऊपर आप राती रात एक एक्टिविस्ट को अरेस्ट करते हो और दूसरे तरफ आप कहते हो कि डिफीट ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, शब्द कुछ भी प्रयोग करते हो। जैसे राहुल गांधी यूएस में जाता है, लंदन में जाता है और ये कहता है कि भाई डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में नहीं है। अरे हम पूछने चाहते हैं क्या डेमोक्रेसी उस अलाइन पार्टीज के साथ है या नहीं? आपके अलाइनमेंट है, डीएमके के सपोर्ट से आप जीतते हैं, आपको वहां डेमोक्रेसी नजर आता है नहीं आता है? विदेश में जाकर आप बदनाम करते हो हिंदुस्तान को। और ये हम पूछने चाहते हैं राहुल गांधी से भी, क्या आप इसका जवाब देंगे? स्टालिन से पूछने चाहते हैं कि ये गवर्नेंस ऐसा चलता है या नहीं? और दूसरी बात, गवर्नर ने जब ये इशारा किया कि भाई ये मंत्री नहीं रह सकता और ये आधार नहीं था कि उनके पास उसका पावर है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के आधार पर उन्होंने पूछा, वो भी गलत हो गया और उस पर भी एजिटेशन। डेमोक्रेसी है इस हिंदुस्तान में। जब मैं इधर इस स्टेज पर बोल रहा हूं और आपको भी अधिकार है, लेकिन एक ट्वीट के ऊपर अगर रात ही रात आपने एक एक्टिविस्ट को पकड़कर जेल में डाला, तो डेमोक्रेसी कहां है तमिलनाडु में? ये मैं राहुल गांधी से भी और स्टालिन से भी पूछता हूं, क्या हालात हो गया है डेमोक्रेसी का? अगर आप लंदन में जाकर कहते हो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, यूएस में जाकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है? श्री राहुल गांधी जवाब दीजिएगा और स्टालिन जी भी जवाब देना, मैं समझता हूं उचित रहेगा। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? I'm sorry, this is Tamil Nadu bordering state.